Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. We'll start in a minute. I'm just waiting for others to join in. तो क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स कब से हैं? I don't know the dates yet. I think the dates will be confirmed in light of the new schedule and everything. So I still don't know the schedule. So with this chapter ending, your course will be over, right? There is nothing else remaining in mathematics. Right? Yes, sir. Okay. Okay, so after this, we will start revision. Once we are done with this, we'll do revision, chapter-wise revision. Okay, so let's get Good morning, started. sir. Good morning. Good morning, ma'am. So, can you please switch on your videos, Anshu, Harsh, Prashant, so that we can get started? Okay, great. Okay, so let's get started. It's a thin attendance, but let's get moving. Okay, so we have completed the theoretical part of this chapter in entirety. ठीक है, तो आपको जो है जो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली आपको इसकी थियरी समझ आनी चाहिए, जो जिस तरह क्वेश्चंस करने हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. इसमें ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं. दैट्स द गुड न्यूज. ठीक है, मेथोडिकली आपको क्वेश्चंस करने हैं. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें किससे आती है? सिली मिस्टेक्स या फिर कैलकुलेशन एरर्स. ओके, सो यू नीड प्रैक्टिस. Okay, so let's do some questions of every type, and please complete the exercises after we are done with this. Find the mean deviation about the mean for the data in exercises 1 and 2. Okay, so basically the entire chapter is about the mean deviation. Okay, we will just do a few of those. So let's do this one. इस डेटा का हमें मीन डिविएशन निकालना है. ठीक है, मीन डी just a second. Okay, so we have to find the mean deviation. Okay, so we have to find the mean deviation about the mean, right? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी होगी? हमें मीन डिविएशन निकालना है अबाउट द मीन. क्या होता है मीन डिविएशन का फॉर्मूला बता दीजिए. चलिए, you would have prepared for this in the exam. मीन डिविएशन किसके इक्वल होता है? इट्स द मीन ऑफ डिविएशंस.
right? It is the mean of deviations. So right, something I have to take care of. Is this formula correct? There's some problem with the formula I have written. Can you help me correct it? मीन ऑफ डिविएशन है, वो तो ठीक लिखा है मैंने, ये मीन है, अराउंड द मीन है, और ये डिविएशंस हैं, और इसका मीन ले रहे हैं। तो इसमें क्या गलती है? कुछ गलती दिखाई दे रही है कहीं पे भी? नहीं समझ आ रहा है? देखिए, बट ये ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना। तो वी हैव टू टेक द डिविएशन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिविएशन डिविएशन ही होता है, तो इसलिए हमें इसका मॉड्यूलस लेना होता है। ठीक है, ये बना हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अब बताइए, सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें एक्साइज पता है, ये है। हमें जो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल आइटम हमें डायरेक्टली पता है। समेशन ये तो एन होता है बस, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये वैल्यू नहीं पता, मीन चाहिए। तो मीन क्या होगा इस डेटा का, बताइए? मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 4 plus 7 11 plus 19 19 28 28 38 50 53 and 80 80, राइट? और कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 आइटम्स। तो मीन कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिविएशन निकालेंगे, यानी this minus 10. Okay, let's write all our deviations, and we will ignore the sign. So what is the deviation here? 6 3 2 1 0 2 3 7, right? These are the deviations. Now we have to add them up. Okay, so standard deviation के फॉर्मूले में डालते हैं, what is sum of deviation? 6 plus 3 9 12 14 17 24, right? So 24, और n क्या है? 8, so the answer is 3. Understood? बिल्कुल सिंपल है, बस फॉर्मूले का यूज है। ओके, लेट्स डू वन मोर। फाइंड द मीन डिविएशन। ठीक है, फिर से मीन डिविएशन निकालेंगे, बट अराउंड द मीडियन दिस टाइम। तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, अराउंड अबाउट मीडियन। क्या होगा फॉर्मूला? समेशन ऑफ xi minus n this by n। ओके, तो सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बेटा कुछ जवाब देना पड़ेगा आपको, तो मुझे पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं। काजल, प्रशांत, सौरभ, सबके वीडियो ऑफ हैं। स्विच ऑन योर वीडियोस। सौरभ, यूट्यूब।
सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं फटाफट बता दीजिए। We have to first sort this data. Okay, so let's sort in an ascending order. So the first step is sorting. So we will first sort. So which is the smallest number here? 10 is the smallest number, right? There is only one 10 and then there are two 11s. Then there is only one 12 and then two 13s. Then there is a 14. There is no 15, right? So there is a 16, 16. Then there are two 17s. And there is an 18. Okay. So this is the sorted data. Now let's see what is the n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So median क्या होगा? Even number है तो median क्या होगा? n by 2 और n by 2 plus 1 का mean, यानी 6 और 7th टर्म का मीन क्या है? 6th and 7th term 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So what is the median? 13 plus 14 by 2, which is 13.5. This is our median. तो अब median आ गया. We come to the final step. We have to find the deviation. तो deviation निकालते 13.5 से subtract करेंगे हर एक में से और उसका positive value लेंगे. So क्या आया? The first subtraction is 3.5, 2.5, 2.5, फिर 1.5, 0.5, 0.5. Okay, 0.5 again, and it is 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, and 4.5. These are our इनको अब एड अप करना है. Let's add them up. Okay, 8.5 and 10, 11, 11.5, 13, 15.5, 18.5, 22, 20.51, 27, right? So यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 27 by n. n कितना था? 12. तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउट द मीडियन. ओके, find the mean deviation about the mean for the data. अब हमें मीन डिविएशन निकालना है अबाउट द मीन. और किस तरह का डेटा है अब ये? What type of data is it? Grouped data. ठीक है,
ग्रुप डेटा है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, क्या ये सॉर्टेड डेटा है। ग्रुप डेटा यूजुअली सॉर्टेड ही होता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर दूसरी क्या चीज चेक करनी जरूरी है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस भी है, राइट। सो वी आर ऑल सेट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, ग्रुप डेटा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, class marks. So what are the class mark? Upper limit plus lower limit by 2. So 50, 150, 250, 350. ठीक है, क्लास मार्क्स आ गया। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, what is the best way to find the mean here? Should we do addition? How do we find mean now? What is the best way to find the mean? We will use the step deviation method. Okay, this is the best candidate for step deviation method. Okay, so let's assume our assumed mean to be somewhere in between. Okay, so it's our choice. Let me use 250. It doesn't matter which one do you use. You can use 350 also, or maybe 450. But you use 450, you will have a lot of negative terms. Okay, so I'm using 250. It is your choice, right? And the class size is 100, so I will use that as my common divisor. So अब जो ui हम निकालते हैं, ui कैसे निकालेंगे, xi minus a by h. Okay, so ui is निकालेंगे, xi 50 minus 250 is minus 200 by 100 is minus 2. 150 minus 250 is minus 100 by 100 is minus 1. This is 250 minus 250 is 0. This is 100 by 100 is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. Right? So we know all the UIs now. Next we will find is UIFI. Okay? So we have to multiply this with this. So what is this? Minus 8, minus 8 again, 0, 10, 14, 15, 16, 15, right? Let's add all of these up. Let's add the frequencies and these. Let's add this up. This is minus 16, right? So basically I know this will go away. This is 30, this is 44 and 54. Okay, so this will add up to 54. What will this add up to? 12, 21, 31, 38, 43 and 50. This will add up to 50. Okay, so what is the mean? What is the mean now? कैसे आता है mean? Mean is so mean is assumed mean plus, which is 250 plus UIFI by means 54 by 50.
right? into 100. So 8. So एक्सक्यूज मी this will सर, be, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। sorry, बच्चे एक बार आ रहे हैं, एक बार फिर जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हाँ, कॉन्स्टेंटली। नहीं है। yes, and they are switching off the videos हाँ, also, right? is also off, sir. हेलो बेटा, अपने पहले तो आप वीडियोस ऑन करिए और यू आर फॉलोइंग इट। आप कोई जवाब भी नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूं आपको। एक्चुअली दिस इज लाइक अ वीडियो। देन आपका इंटरेस्ट तभी बनेगा ना जब आप कुछ जवाब देंगे, राइट? राइट। रजनीश अपना वीडियो ऑन करिए। हिमांशु, रजनीश एंड हिमांशु, रजनीश, एंड शिव प्रकाश। आपका वीडियो ऑन है बट आई कांट सी यू। आपने ब्लॉक किया हुआ है अपना कैमरा। Rajneesh, switch on your camera. Now, Prashant, unmute yourself. यस सर। हाँ, आपको समझ आ रहा है ये? यस सर, आ रहा है। ओके, तो थोड़ा व्हेन आई एम आस्किंग प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, मुझे पता चलना चाहिए। और क्लास में जैसे कि मैम ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, उससे तो कोई घूम के आके तो फायदा नहीं क्लास के अंदर, राइट? यू हैव टू पे अटेंशन। स्टैटिस्टिक्स में जो सॉल्विंग पार्ट होता है वो थोड़ा लंबा होता है, राइट? और ट्रिकी नहीं होते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो दिस मे नॉट बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी तो जरूरी है। ओके, और छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमेशा ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि समय लगता है, इसलिए उसको ज्यादा नंबर का ही बनाना पड़ता है। और छोटी सी गलती और 0 आ जाता है। तो वी हैव टू पे अटेंशन एंड डू दिस। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सबके वीडियोस ऑफ हैं। रजनीश, विशाखा, switch on your videos। ठीक है, तो हमें मीन मिल गया है। मीन मिलने के बाद नेक्स्ट क्या चाहिए होता है हमें? हमें क्या निकाल रहे हैं? मीन डिविएशन निकाल रहे हैं। तो मीन निकालने के बाद डिस्टेंस फ्रॉम मीन चाहिए, राइट? तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम मीन चाहिए। तो किसका डिफरेंस निकालेंगे? जो xi है, xi माइनस मीन का एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 50 माइनस 358 क्या होता है? 308। माइनस 308 होता है, बट माइनस हम छोड़ देंगे, राइट?
Just a second. There is small technical problem. Okay. Now 150 minus 358 will be minus 208, but we only need the positive value. Similarly, now we will have 108, then only 8, and then we will have what? 450 minus 358. Now we will start getting positive numbers. And what will that be? What will that be? 450 minus 358. 92. और उसके बाद जो है, we will get a sequentially numbers, right? That's why it doesn't take so much time to solve it. Okay, now we have to multiply this difference, right, with the frequency. So BI FI. So 308 into 4, okay, which is 1232, and 30 into 8 is 64. 108 into 9 is 972. Okay, 8 into 10 is 80. 92 into 7. What is 92 into 7? 192 into 5. Nobody's interested, right? What will that be? And 192 into 4? And 392 into 3. Sir, 768. What is 768? 192 into 4. 192 into 3 होगा. देखिए, this and this. Okay. Now we have to add all of these up. Okay. Just do the addition. Okay, it comes out to be 7896. Now the final step. How will we find the mean deviation? Is equal to 7896 by, what was the summation here? 50. Which is 157. Okay. So this is the mean deviation. Please switch on your videos. I don't know कि आप बार बार वीडियो क्यों बंद कर लेते हैं. Keep your videos on. स्टूडेंट्स अटेंडेंस जाएंगे ना, वीडियो ऑफ मत करो. Okay. Now
a similar question, but this time we have to find it around the median. निकालना mean deviation ही, but around the median. So सबसे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालते हैं. कंटिन्यूअस है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. सो वी कैन जस्ट राइट क्लास मार्क्स. And then what we also need is the cumulative frequencies. Why? Because we need to find median of group data. We need the cumulative frequencies. So what are cumulative frequencies? 6, 14, 28, 44, 48, and 50. Right? Now we need to find first the mean. How will we find the mean? Group data, median. How do we find the median of group data? सबसे पहले क्या करना पड़ता है ग्रुप डेटा में? n is equal to 50, right? तो हमें n by 2 देखना है कि किस क्लास में आता है. 25 कौन सी क्लास में आता है? 25 आएगा इस क्लास में. सो ये बन गई हमारी मीडियन क्लास. ओके, सो इन योर पेपर यू हैव टू फर्स्ट राइट मीडियन क्लास. ओके, इज 22. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन. तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन? लोअर लिमिट plus n by 2 minus CF by F into H. Okay, this is the formula for class. From class 10, you have to remember the formula. Okay, so what is the lower limit of the median class? 20 plus n by 2 is 25. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे? उससे पहली क्लास. वो क्या है? 14. Why? By the frequency of the median class, which is 14, into the class size, which is 10. Okay, so which is 20 plus, this is 11, 110 by 14. Okay, so how much is that? Okay, roughly 7.8. Okay, so ये आ गया हमारा 27.8. Now we know the median. What is the next thing we will do? We will find the distance from the median का absolute value. So हमें DIs निकालने. Okay, XI, which is 5 minus 27.8. Okay. $27.8 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से क्या आएगा? 22.8. फिर क्या आएगा यहाँ पे? 12.8.
and then it will be 2.8. And then 35 minus this is 7.2, 17.2, and 20. Sir, 7.5. देखिए, what are we doing? We are doing 35 minus 27.8. Right? So 7.2 ही आएगा. Now we have to do DIFI. ओके यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भूल जाइए, कहीं इससे मल्टीप्लाई ना हो जाए, इससे करना है. 6 into 22.8. $136.8. Okay, 12.8 into 8, 102.4. Okay, 2.8 into 14. Okay, so these questions are pretty laborious. To 16. Okay. Two. Okay. Four. Okay, now we have to add all of these up. Summation of DIFI. So let's do that. So this all sums up to 516.8. So mean deviation क्या आएगा? 516.8 by 50, which will come to 10.34 marks. Okay. Excuse me, sir. Yeah. Hello. Yes. Sir, actually list में जो रहेंगे वही present होगा ना? Yes. Yes. Okay, sir. प्रशांत, रजनीश, कैमरा ऑन रखिए बेटा. रजनीश, वीडियो बेटा. रजनीश ने ऑन किया ही नहीं कैमरा ऑलमोस्ट कभी भी. Response भी नहीं है, sir. So we can ignore Rajneesh today.